Supporting Iranians. Usama Khilji Dawn Editorial. Published on December 7, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The protests led by women and young people in Iran and supported by a cross-section of society under the slogan of zindagi, azadi, women, life and freedom, is a matter for celebration for the region. It comes at a time when not only are women fed up with being dictated to by men as to how they should dress and the freedoms they are allowed, as if they were born in chains and need to fight for all basic rights, but they come at a time when Afghanistan is under the Taliban, who have clamped down on women's fundamental rights, including mobility, expression, employment, and education. This should be cause for alarm for any state in the region that values the freedoms and rights of its populace. In this context, it is disappointing that the Pakistani delegation at the United Nations Human Rights Council, UNHRC, in Geneva voted against a resolution calling for investigation of the violation of basic human rights of the Iranian people by the Islamic Republic of Iran. The regime has so far killed hundreds of protesters for exercising their fundamental right to protest, a string of which started with the killing of Mahsa Jina Amini in Iran for not covering her hair properly. The imposition of such standards is policed by a moral police in Iran that punishes women for excesses such as letting their hair show. Whereas it is the right of each woman, as much as of anybody else, to decide how they want to dress, such draconian measures have become a cause of frustration for the Iranian people and are symbolic of the wider oppression perpetrated by the regime. It is important to remember that the rights the people of Iran are fighting for are the same fundamental rights protected by the Constitution of Pakistan. Article 9 protects the right to life, Article 14 guarantees the right to dignity, Article 17 protects the right to freedom of association, Article 19 protects the right to freedom of speech, and Article 25 protects the right to equality. The rights Iranians are fighting for are the same ones in our constitution. In this context, it is the moral responsibility of the Pakistani government to stand for the basic rights of all people in the world as per the United Nations Universal Declaration of Human Rights that highlights the inherent dignity of people everywhere, with all UN member states under an obligation to uphold and protect these rights. As there is credible evidence of a government violating these rights, the UNHRC is obligated to call for an investigation into these violations by a designated special rapporteur. It is a matter of pride for Pakistan that our foremost human rights activist, the late Asma Jahangir, was the special rapporteur for Iran on behalf of the UNHRC at the time of her untimely demise. Pakistan should exercise leadership in the region for the protection of the rights of the people and progressive values. As the first Muslim country in the world to have had a woman elected as Prime Minister, we have a special responsibility to lead when it comes to the protection of the rights of women. Many hailed the symbolism of Minister of State for Foreign Affairs Hina Rabbani Kar leading the delegation from the Foreign Ministry to speak to the Afghan Taliban in Kabul recently. This must translate into strong policy positions around women's rights and leadership regionally and globally. As non-state extremists get emboldened in Pakistan to attack girls' schools, as happened in Waziristan and Swat recently, the regional trend of restraining the rights of the girl child and women is trickling across borders. Hence a strong policy position in favor of girls' right to education and women's right to dignity must be protected and advocated for by the government here. Maintaining relations with Iran's government must not be at the cost of letting down the people of that country, who are risking it all for their inherent dignity. What the Constitution guarantees for Pakistanis is committed to by Pakistan and Iran, and required by international law under the United Nations, and it must be respected. It is as important for us to support the right of women and transgender people to not be forced to wear headscarves in Iran as it is for us to advocate for the right of women in France and India to wear headscarves as governments try to dictate women's basic choices. Killing women for defying deeply entrenched and misguided patriarchal dictations,
and torturing and killing protesters who demonstrate in support of them, must not be overlooked. In this light, it is important that Pakistan revisits its policy that guided the no vote at the UNHRC in November, as Pakistanis have every reason to stand in solidarity with the zindagi, azadi slogan of the people of Iran. The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. Published in Dawn, December 7, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. ईरान में ख्वातीन और नौजवानों की क़ियादत में होने वाले मुज़ाहरे और मुआशरे के एक मुख्तलिफ तबके की जानिब से ज़िंदगी, आज़ादी, ख्वातीन, ज़िंदगी और आज़ादी के नारे के तहत होने वाले मुज़ाहरे ख़ित्ते के लिए जश्न का मौजू हैं। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब न सिर्फ ख्वातीन मर्दों की तरफ से ये हुक्म दिए जाने से तंग आ चुकी हैं कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और उन्हें आज़ादियों की इजाज़त दी गई है, गोया वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उन्हें तमाम बुनियादी हुकूक के लिए लड़ने की ज़रूरत है, बल्कि वो ऐसे वक्त में आई हैं जब अफगानिस्तान तालिबान के मातहत है, जिन्होंने नक्ल व हरकत समेत ख्वातीन के बुनियादी हुकूक पर कदगन लगा रखी है। इजहार, रोज़गार और तालीम। ये खित्ते की किसी भी रियासत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए जो अपनी आबादी की आज़ादियों और हुकूक की कदर करती है। इस तनाजुर में ये बात मायूस कुन है कि जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल UNHRC में पाकिस्तानी वफ़द ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से ईरानी अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा करने वाली करारदाद के खिलाफ वोट दिया। हुकूमत अब तक सैकड़ों मुज़ाहिरीन को एहतजाज के अपने बुनियादी हक का इस्तेमाल करने पर हलाक कर चुकी है, जिसका एक सिलसिला ईरान में मासा जीना उमेनी के कत्ल से शुरू हुआ था क्योंकि इसने अपने बालों को मुनासिब तरीके से नहीं ढांपा था। इस तरह के मेयारात को नाफिज करने के लिए ईरान में एक इखलाकी पुलिस की तरफ से पुलिस की जाती है जो ख़वातीन को ज़ियादतियों के लिए सज़ा देता है, जैसे उनके बालों को ज़ाहिर करने की इजाज़त देता है। अगरचे ये हर औरत का हक है जितना कि किसी और का ये फैसला करना कि वो किस तरह का लिबास पहनना चाहती है। इस तरह के जालिमाना इक़दामात ईरानी अवाम के लिए मायूसी का बाइस बन चुके हैं और हुकूमत की तरफ से वसी पैमाने पर जुल्म और सितम की अलामत है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ईरान के अवाम जिन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं वो वही बुनियादी हुकूक हैं जिनकी हिफाजत पाकिस्तान के आईन ने की है। आर्टिकल 9 ज़िंदगी के हक की हिफाजत करता है। आर्टिकल 14 वकार के हक की ज़मानत देता है। आर्टिकल 17 एसोसिएशन की आज़ादी के हक की हिफाजत करता है। आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी के हक की हिफाजत करता है और आर्टिकल 25 मुसावात के हक की हिफाजत करता है। ईरानी जिन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं वो हमारे आईन में भी हैं। इस तनाजुर में ये पाकिस्तानी हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के आलमी एलामिया के मुताबिक दुनिया के तमाम लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो जो हर जगह लोगों के मौरूसी वकार को उजागर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक उन हुकूक को बरकरार रखने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के तहत हैं। चूँकि किसी हुकूमत की जानिब से उन हुकूक की खिलाफ वर्जी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद हैं, इसलिए UNHRC इस बात का पाबंद है कि वो इन खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात किसी नामज़द ख़ुसूसी नुमाइंदे से कराए। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि इंसानी हुकूक की हमारी सरकर्दा कारकुन मरहुमा आसमा जहांगीर अपनी नागहानी मौत के वक्त UNHRC की जानिब से ईरान की ख़ुसूसी नुमाइंदा थी। पाकिस्तान को अवाम के हुकूक और तरक्की पसंद अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ित्ते में क़ियादत का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया का पहला मुस्लिम मुल्क होने के नाते जहां एक खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई है, हमारी एक ख़ास जिम्मेदारी है कि हम ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में क़ियादत करें। बहुत से लोगों ने वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रबानी खर की जानिब से हाल ही में काबुल में अफ़गान तालिबान से बातचीत के लिए वज़ारत ख़ारजा के वफ़द की क़ियादत करने की अलामत को सराहा। इसे इलाकाई और आलमी सतह पर ख़वातीन के हुकूक और क़ियादत के बारे में मज़बूत पॉलिसी पोजीशन में तर्जुमा करना होगा। जैसा कि पाकिस्तान में गैर रियासती इंतहा पसंद लड़कियों के स्कूलों पर हमले करने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, जैसा कि हाल ही में वज़ीरिस्तान और सवात में हुआ है,
लड़कियों और औरतों के हुकूक को रोकने का इलाकाई रुझान सरहदों के पार घूम रहा है। लिहाजा लड़कियों के तालीम के हक और ख़वातीन के वक़ार के हक में एक मजबूत पॉलिसी पोजीशन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और यहाँ की हुकूमत की तरफ से इसकी वकालत की जानी चाहिए। ईरान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना इस मुल्क के लोगों को नीचा दिखाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अपने मौरूसी वक़ार के लिए सब कुछ खतरे में डाल रहे हैं। आइन पाकिस्तानियों के लिए जिस चीज़ की ज़मानत देता है वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से पुरज़्म है और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैन अल अक़वामी कानून के तहत इसकी ज़रूरत है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए। हमारे लिए इतना ही अहम है कि हम ख़वातीन और ट्रांसजेंडर लोगों के हक़ की हिमायत करें कि ईरान में हिजाब पहनने पर मजबूर न किया जाए, जैसा कि हमारे लिए फ्रांस और हिंदुस्तान में ख़वातीन के हिजाब पहनने के हक़ की वकालत करना है, क्योंकि हुकूमतें ख़वातीन के बुनियादी इंतखाब को तय करने की कोशिश करती हैं। ख़वातीन को इंतहाई गहरी और गुमराह कुन पिदरसरी डिक्टेशन की खिलाफ वर्जी करने पर कत्ल करना और उनकी हिमायत में मुजाहिरा करने वाले मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाना और कत्ल करना को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस तनाजुर में यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे जिसने नवंबर में UNHRC में नहीं वोट की रहनुमाई की थी, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास ईरान के अवाम के जान, जिंदगी, आज़ादी के नारे के साथ यकजहती में खड़े होने की हर वजह मौजूद है। मजमून निगार डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाले एक फोरम बोलो भी के डायरेक्टर हैं। डॉन अखबार में शाये शुदा 7 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.